many new things you are going to learn today. So starting from the very first and the basic definition of operating system. So the question is, what is an operating system? So in the last lecture I asked you how many of you have heard about this operating system word. So almost all of you said that yes, we have heard and we know some of the examples. Now we will go into the technicality, the definitions, the understanding, the concepts, and the more details of this operating system. So if I start with the very first and the basic concept of operating system. So operating system is any program that manages a computer's hardware. So in the hardware, we have mainly a CPU, our input and output devices, that is our keyboard, our mouse, our monitor, through which we are able to see the screen. And with the input output devices, we used to communicate with the computer system, and CPU, we have memory also. So basically operating system kya hai? Operating system is a program that manages a computer's hardware. So for now we can just understand this specific line. अगर मेरे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लोड है, दैट मीन्स आई कैन नॉट एक्सेस द कंप्यूटर हार्डवेयर. मेरे सिस्टम में कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, दैट ऑल विल बी useless until I have an operating system. That can be any operating system. It can be Windows, it can be Linux, Unix, or it can be Mac. But जब तक operating system मेरे machine, मेरे system में नहीं है, that means it is useless and we cannot perform any kind of task until we have an operating system in our machine. So that means operating system is any program that manages a computer's hardware. So that means if I want to utilize all the resources, all the hardware, मैंने कीबोर्ड खरीदा, एक माउस खरीदा, एक मॉनिटर लिया, एक सीपीयू लिया, लेकिन अगर मैंने उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं किया, तो तब तक वो मशीन, वो हार्डवेयर यूटिलाइज नहीं होगा. And second important line says operating system provides a basis for application programs. Now we will go into detail. Application programs, for now you can understand as all those different softwares which we install in our machines for specific purpose. If I want to see a movie or want to listen a song, I will install VLC media player. If I want to edit my photographs, I will install a Photoshop or any other software. So all these things comes under the category of application program. So what this line says, it provides a basis. That means जब तक मेरे सिस्टम में, मेरे मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, तब तक मैं ये बाकी सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर पाऊंगा. तो मुझे अगर MS ऑफिस इंस्टॉल करना है, विच इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम, तो MS ऑफिस इंस्टॉल करने के लिए मेरे मशीन में पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए. अगर मुझे VLC मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करना है फॉर एनी सॉफ्टवेयर, फॉर एनी एप्लीकेशन प्रोग्राम, इफ आई वांट टू प्ले एनी गेम on my machine, so first of all an operating system is the basic requirement. So that's why operating system provides a basis for the application program. So application programs, for now you can assume any software which we manually install later on according to our requirement, for listening song, for watching a movie, for playing games, for मेकिंग अ शीट इन द एक्सेल फाइल. सो MS ऑफिस भी अगर मुझे इंस्टॉल करना है तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए. सो आई होप दीज 2 points आर क्लियर. And the third point says an operating system is nothing. It is a program which acts as an intermediate between a computer user and the computer hardware. So operating system basically क्या है? एक intermediate है. किन दो लोगों के बीच में? कंप्यूटर यूजर के बीच में. अगर मुझे हार्डवेयर को एक्सेस करना है, मुझे मॉनिटर पे आउटपुट देखनी है, मुझे कीबोर्ड से इनपुट देनी है, तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? मेरे सिस्टम में कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए. इफ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, देन आई वॉन्ट बी एबल टू communicate with the machine, I won't be able to utilize all the computer hardware. So I hope the things, the 3 points are very much clear to all of you. So it is simply a program that manages a computer's hardware. It provides the basis for application programs, and it acts as an intermediate between the user of the computer and the computer hardware. So I think सबको पता होगा कि सबसे पहला टास्क जब हम नया सिस्टम या लैपटॉप लेते हैं तो हमें कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफॉल्ट वो इंस्टॉल करके देते हैं. एंड मेनी ऑफ यू मस्ट हैव इंस्टॉल्ड द विंडोज योरसेल्फ ऑल्सो. कई बार हमारे वायरस की वजह से विंडो वर्क करना बंद कर देती है, या हम उसको
द्वारा से इंस्टॉल करते हैं. सो दैट इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट. सो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं है देन आवर मशीन इज यूजलेस. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द गोल्स. सो गोल्स बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पस क्या है? टू एग्जीक्यूट द यूजर प्रोग्राम्स एंड मेक सॉल्विंग द यूजर प्रॉब्लम्स ईजियर. सो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम हमें किस लिए प्रोवाइड किया गया है? सो दैट द यूजर कैन complete their programs, execute their task, and to make the complex problem easier for the user, and to make the computer system convenient to use. Now this convenient word is very important. I will just go through this word in next 2-3 slides. So convenience is one of the major factor why Windows were so much in demand from past a few years. And the last important goal of operating system is to use the computer hardware in an efficient manner. So I have just discussed operating system नहीं है, so हमारे पास machine useless है. It would be very difficult to use the computer hardware, the various resources. So operating system is the basic requirement of any machine, and that manages the computer hardware, and that provides the basis for executing various application programs or software. So I hope this basic things about operating system is clear to all of you. Now, and we have the structure of computer system according to our book. So there are so many different division in different books, but we have to follow this standard book. So Galvin says कंप्यूटर सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेजर कंपोनेंट्स. तो हमारे पास किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की अगर हम बात करें तो 4 मेजर कंपोनेंट्स होंगे या होने चाहिए. सो वेरी फर्स्ट इज द हार्डवेयर. अगर हमारे पास हार्डवेयर नहीं है तो हमारी मशीन ही एग्जिस्ट नहीं करती. एंड हार्डवेयर का पर्पस क्या है? दैट प्रोवाइड्स the basic computing resources. So if I want to have a computer system, if I want to have a laptop, so I should have a CPU, I must have a memory. So memory also comes under the category of hardware. RAM हम additional भी add कर सकते हैं. If you know, you must upgrade your system anytime. And the various input output devices. So the simplest structure is we have a keyboard, we have a mouse, and we have a monitor screen. So all these are the hardware. So I think you are familiar with these terms, the difference between software and the hardware. You are the second year students. Second important component is operating system. As I have just discussed, the task of operating system is to control and coordinate the various hardware components among various users and the application. So in the last slide, we have just discussed what is operating system, and it mainly manages the computer hardware, it controls and coordinates the use of hardware. So मेरे पास CPU है, मेरे पास कीबोर्ड है, मेरे पास माउस है और मॉनिटर है, then it is mandatory कि मुझे इन सब को यूज करने के लिए अपने सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम अपलोड करना होगा. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने के बाद I will be able to communicate or I will be able to access or utilize all these hardware resources efficiently. Third important component of any computer system structure is the application program, which is simply software. So it defines the ways in which the system resources are used. So software हमारे पास किस लिए होते हैं? अलग-अलग task के लिए we have to solve the computing problems. And examples you can see, we have word processors. The simplest example is the MS Office. So if I want to write any letter, I will use MS Word. If I want to make any data or record of the students, I can make an Excel sheet. So all these are softwares, or we can say application programs. Similarly, we have web browsers. If I want to use internet, then we have some games or database systems. So all these are softwares which are also one of the major component of any computer system. And last and the most important are the users who want to access this computer system or who want to solve their complex problems using this computer. So according to this particular book, a computer system has 4 major components. Very first is the hardware, second is the operating system, third is the softwares which we want to install in our system for performing different tasks. And the last and the most important component of any computer system is the computer user, which can include any other machines also, and the simple people also. So I hope this is very simple thing and all of you are aware of these terms, what is in hardware, what is in software, and what is a user or operating system I have just explained you. So this is the diagrammatical view of the components. So you can see here clearly
as the definition of operating system says, it is an intermediate between the computer user and the computer hardware. So in this diagram, it is quite clear that user is at the top level and hardware is at the bottom. And in between the user and the computer hardware, we have an operating system. And with the help of operating system, we will be able to have various application programs through which user can perform or solve their various computation problems. So I hope this diagram is very much clear, and this diagram also is very important, and it clearly defines the definition of operating system, that an operating system is an intermediate between the user of the computer and the computer hardware. So if I want to access anything, any computer hardware, I must have operating system. It makes easier. So after having operating system in my system, I can easily install all these softwares or the application programs in my machine. So I hope all of you are familiar with this thing, but this diagram is very important and it clearly indicates what operating system is. Now, what operating system do is another important point. So there are two different views what operating system do. So operating system task can be dependent on two different point of views. So the very first is the user view. User किस view से देखता है कि operating system उसके लिए क्या करता है, and second is the system view. Operating system खुद को कैसे analyze करता है. So what services or what functionalities can operating system provide. So the very first is the user view. So now we will talk about the convenience. So most of the computer users sit in the front of a personal computer, जिसमें हमारे पास एक कीबोर्ड होगा, एक माउस होगा, एक सीपीयू होगा, एंड अगर एक ही पर्सन को यूज करना है, उसकी खुद की मोनोपोली है, देन व्हाट इज द मेजर पर्पस? यूजर्स वांट कन्वीनियंस. यूजर को क्या चाहिए? ईज ऑफ यूज चाहिए कि मेरे को सिस्टम एक्सेस करना इजी हो. उसके लिए रिसोर्स यूटिलाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता. नाउ दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में फर्स्ट इज द कन्वीनियंस एंड सेकंड इज द रिसोर्स यूटिलाइजेशन. सो इफ द यूजर इज ऑन द पर्सनल कंप्यूटर, ही इज द सिंगल हैंडेड, he is having the one computer, his own personal computer, he will always want that convenience must be there. So Windows is the operating system that provides convenience to the user, that is the ease of use through graphical user interface. हमारे पास icons हैं, हमारे पास files हैं, directories हैं, folders हैं, माउस के क्लिक से हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं. So that is one of the biggest reason why Windows were most commonly used operating system from the past few years. And second important factor is resource utilization. So in the case of resource utilization, it is used in the case where we have mainframe computers or mini computers where sharing are there. There are so many different users, they have to work on the common platform. So for that case, instead of convenience, the major purpose is the utilization of resources. So there can be various different resources such as memory, input output, CPU time. So उस केस में मेजर पर्पस क्या रहता है कि रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज किया जाए. अगर 50 यूजर एक मशीन को एक साथ एक्सेस कर रहे हैं, तो किसको किस टाइम पे प्रिंटर चाहिए वो मैनेज करना, तो वो प्रायोरिटी रहती है रादर देन दिस कन्वीनियंस और ईज ऑफ यूज. सो दैट इज वाई आप लोग जब प्लेसमेंट के बाद कंपनीज में जाएंगे, 90% ऑफ द कंपनी सिस्टम यूजेस आइदर यूनिक्स एंड लिनक्स. सो यूनिक्स एंड लिनक्स आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स which are more compatible or more towards the resource utilization rather than convenience or ease of use. So simple example आप check कर सकते हो. If you are working with Windows, वो आपको इतनी easy लगेगी, इतनी convenience लगेगी कि आप अगर आप Linux या Unix पे switch करोगे, you will find it very complex or very difficult to work with Linux operating system. But you have to remember it totally depends upon the user view. यूजर को कन्वीनियंस चाहिए या फिर रिसोर्स यूटिलाइजेशन चाहिए. अगर आपका अपना खुद का सिस्टम है, पर्सनल कंप्यूटर है, देन डेफिनेटली विंडोज विल बी योर फर्स्ट चॉइस. बट इन द बिग ऑर्गेनाइजेशंस, इन
the companies where you are going to work after your B.Tech, definitely you will find in majority of computers there will be either Linux or Unix, because there many employees work on the same machine, the resources are shared, input output devices are shared, memory has been shared. So there the purpose is the utilization of resources, resource sharing is there rather than the providing convenience. So that's why many people started working on Linux in their college time also, so that they won't face any difficulty, or they must get familiar with this Linux or Unix operating system till they reach the MNC environment. And then we have some workstations also, resources from the servers. And the last category is the handheld computers, which we can say mobile phones or any touch screen, which are basically made for a single user. So that also provides convenience as compared to the resource utilization, and they also focus on the battery life of that particular computer. So these are some of the important things. So major two things here are the user's view totally depends upon the convenience or resource utilization. अगर यूजर को ease of use ज़्यादा चाहिए, convenience ज़्यादा चाहिए, then surely Windows is one of the best example, and that is one of the major reason why Windows is most commonly used. But if there are shared computers, for example, mainframe computers, mini computers, or workstation, where rather than convenience, the resources are more important, then Linux and Unix are the best examples of operating systems which are better for resource utilization, but they are not that much convenient for a user. So it depends upon user. And if I talk about the system view of the operating system, so operating system itself has so many different important tasks to do. So operating system is a resource allocator. So it manages all the resources such as CPU time, memory space, input output devices, etc. So ये basically जो words हैं CPU time, it depends, or it is related with process management. Memory space is related with the memory management. So operating system ने manage करना है. If there are so many different processes, there are different programs who want to execute. So पहले कौन सा program execute करना है, किसको priority देनी है, ये सब कौन decide करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम. रैम में लिमिटेड स्पेस है, रैम में इस टाइम पे पहले किसको रखना है, जैसे ही वो वाला प्रोग्राम खत्म हो गया उसको रैम से बाहर निकाल के नया प्रोसेस लेके आना है, ये सारा काम कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम. सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ रिसोर्स एलोकेटर, and it decides between the conflicting request for efficient and fair resource use. So if suppose 20 people are working on a single machine and they have a single common printer, अगर एक टाइम पे दो लोगों ने प्रिंट की कमांड सेम टाइम पे दे दी, तो पहले किसकी प्रिंट कमांड एग्जीक्यूट होगी, कौन से प्रोसेस को प्रायोरिटी मिलेगी, कंफ्लिक्ट आ गया अगर रिक्वेस्ट का तो कैसे मैनेज करना है, ये सारा काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का. And second important task is it is a control program. It controls the execution of the program to prevent errors and improper use of the computer. So operating system का major task क्या है? Programs को execute करना without having any error and without having any improper use of the computer, एक fast way में, without any error, without any bugs, fastest और less time में वो computer system user को उनके programs या task execute करके दे. So this is the major task of operating system. And if I talk about the standard definition of operating system, so the fundamental goal of computer system is to execute the user program and to make the problems easier for the user. But there is no standard definition of operating system, as you can see. But if still we want to define the operating system, so operating system is the one program running at all the times on the computer. So this line is very important. So you can see as long as we power on or reboot our computer, बाकी कोई भी सॉफ्टवेयर रन हो ना हो, या हम उसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रन करते हैं. इफ आई वांट टू टाइप अ लेटर, आई जस्ट गो टू MS ऑफिस, MS वर्ड ओपन किया, लेटर टाइप किया, सेव करके बंद कर दिया. बट ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमेशा ही रन करता रहेगा जब तक मेरा कंप्यूटर सिस्टम ऑन है. सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द वन प्रोग्राम रनिंग एट all times on the computer, and that running
for a picture of the operating system is usually called as the kernel. So kernel is running all the time. जैसे ही मैंने अपना सिस्टम ऑन किया, सीपीयू से बटन ऑन किया, सबसे पहले विंडोज का मुझे सिंबल दिखाता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उस टाइम पे मेमोरी में लोड होता है, दैट इज द बूटस्ट्रैप, उसको अभी हम पढ़ेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम तभी से स्टार्ट हो जाता है जैसे ही मैंने अपने सिस्टम का पावर ऑन किया, और ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा ही काम करता रहेगा जब तक मैं दोबारा से कंप्यूटर को शट डाउन नहीं करता। सो उसके अलावा जो भी हमारे सिस्टम, एवरीथिंग एल्स इज आइदर अ सिस्टम प्रोग्राम और एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। सो इसको हम डिटेल में देखेंगे, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन that if we want to define operating system, there is no standard definition, but still we can say that operating system is the one program running at all the times on the computer, and that running portion or running part of that operating system is known as the kernel. So I hope I am clear till here. So if anybody is having any doubt, you can just ask, or you can just type in the chat box also. Any doubt, anyone till now? No, sir. Okay. So I hope the things very much you are familiar also, and you are understanding it. So this is the standard definition. There is no standard definition, but still if we want to define any operating system, so operating system is the program which runs all the times on the computer system. So आप सब लोगों को पता होगा, जैसे ही हमने पावर ऑन किया सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ही वर्क करना स्टार्ट करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा वर्किंग रहता है, हमेशा रनिंग रहता है until we are going to power off our computer system. And you can see this is the structure or organization of computer system, and I'm not going into much detail. As you can see, आप सभी लोगों ने डेस्कटॉप पीसी देखा है, आपने यहाँ आपके पास घर पे भी होगा, और लैब्स में आप लोगों ने देखा है, वी हैव अ सीपीयू, सीपीयू के बैक साइड पे बहुत सारे यूएसबी पोर्ट या प्लग्स होते हैं, सो उस पे हमारी मॉनिटर की वायर और जो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, एक हमारा कीबोर्ड का, एक हमारा माउस का जो प्लग है वो हमारे सीपीयू के एंड में लगता है. सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज इट इज कनेक्टेड थ्रू अ कॉमन बस. Now this is a concept of topology which you people will study in computer networks in third year. So for now you can just see this is the common line which includes all these important components of the computer. This is CPU, as I have just discussed. Then we have some hardware, that is mouse, keyboard, printer. Then we have monitor, and there is a memory, and we have some disk controller. We can say we have hard disk within the CPU. So all these are connected. So आप लोगों को पता है बहुत सारी वायरिंग होती है, and हमारे पास मॉनिटर के पीछे एक प्लग लगता है, एक सीपीयू के पीछे लगता है, फिर हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, कुछ हमारे सीपीयू के पीछे जितने पोर्ट्स बने होते हैं वो हम उसमें कर सकते हैं, हम लैन लगा सकते हैं. सो ऑल दीज आर द सिस्टम ऑफ द any structure of the computer system. Now moving on to the startup. So this particular topic I think all of you must be familiar. So for a computer to start running, when it is either powered up or it is rebooted, it needs to have an initial program to run. Now this particular line is very important. जैसे ही हम अपने सिस्टम को या तो ऑन करते हैं या फिर रीस्टार्ट करते हैं, तो एक इनिशियल प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट रहती है जो अपने आप रन करेगा, एंड दैट पर्टिकुलर इनिशियल प्रोग्राम इज नोन एज द बूटस्ट्रैप प्रोग्राम. सो आप कई लोगों को आप में से पता होगा. सो इफ यू आर अवेयर दैट इज वेरी गुड, एंड इफ यू आर नॉट अवेयर, सो दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस. सो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम is loaded into the main memory whenever we switch on or power on our computer system, or whenever we restart our computer system. And generally this bootstrap program is stored in computer hardware, and that is mainly in ROM, or we can say EEPROM, which is electrically erasable programmable read-only memory. And that bootstrap program which is stored in ROM is known as the firmware, and it initializes all the aspects of the system from CPU registers to device controllers to memory content. So आप सब लोगों ने नोटिस किया होगा, जैसे ही हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो एक बूटस्ट्रैप प्रोग्राम अपने आप रन होता है, हमारी विंडोज का लोगो आता है, वो स्टार्ट होती है, इनिशियलाइज होती हैं, और वो उतने टाइम में बूटस्ट्रैप प्रोग्राम क्या करता है, सारे के सारे कंपोनेंट्स जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम से अटैच हैं वो सबको इनिशियलाइज करता है. आपने देखा होगा आपके कीबोर्ड में एक लाइट आती है 1 मिनट के लिए, वो चेक करता है कि सारे जो डिवाइसेस हैं वो कनेक्टेड हैं या नहीं, हमारा कीबोर्ड काम कर रहा है या नहीं, हमारा माउस काम कर रहा है या नहीं, हमारा सीपीयू काम कर रहा है या नहीं, हमारा जो मॉनिटर है उसकी वायर
सही तरह से प्लग है या नहीं। सो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम अपने आप लोड होता है। कहाँ लोड होता है? रैम में लोड होगा जैसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट होगा। अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। किसी भी प्रोग्राम को अगर रन होना है कंप्यूटर सिस्टम में तो वो पहले रैम में जाता है। रैम इज द फास्टेस्ट, रैम इज फास्ट एज कंपेयर टू रोम और एनी सेकेंडरी मेमोरी। सो दैट्स व्हाई एनी प्रोग्राम और एनी प्रोसेस who wants to execute must be loaded into RAM first and then it start executing. So यहाँ हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर स्टार्टअप की। तो जब भी हम अपना पावर ऑन करते हैं या रीस्टार्ट करते हैं, प्रोग्राम अपने आप स्टार्ट होगा रन होना। दैट इज नोन एज द बूटस्ट्रैप प्रोग्राम, जो जनरली रोम में स्टोर होता है। और बूटस्ट्रैप प्रोग्राम का काम क्या है? इट इनिशियलाइजेस ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम। तो सारी चीजें चेक करना। एंड द लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट loads the operating system and starts executing that system. So major task of bootstrap program is to load the operating system into the RAM so that the operating system starts working. So जितनी देर में आपका सिस्टम स्टार्ट होता है, आपने देखा होगा 5 से 7 मिनट लगते हैं हमेशा, तो तब तक इनिशियली हमारा बूटस्ट्रैप प्रोग्राम रन कर रहा होता है, जिसका मेजर टास्क क्या है? सारी चीजें इनिशियलाइज करना और ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करना सो दैट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा वर्क करना स्टार्ट कर दे। और जैसे ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है तो हमारे पास जो फॉर्मेलिटीज है वो खत्म हो जाती है। हमारा जो डेस्कटॉप है हमें वो दिखने लग जाता है, हमारी विंडोज कंप्लीटली वर्क करना स्टार्ट कर देती हैं। सो दिस स्टोरेज स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, द वेरी फर्स्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइन आपकी पूरी प्रोसेस मैनेजमेंट में काम आएगी, तो भाई इस लाइन को ध्यान से देखो। सीपीयू कैन लोड इंस्ट्रक्शंस ओनली फ्रॉम मेमोरी। सीपीयू को इंस्ट्रक्शंस लोड करनी है तो वो सिर्फ कहाँ से कर सकता है? मेमोरी से। अब मेमोरी के पास हमारे पास मेन मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। सो एनी प्रोग्राम टू रन मस्ट बी स्टोर्ड देयर इन द मेमोरी। तो जब तक मेमोरी में नहीं आएगा कुछ भी इंस्ट्रक्शन या कुछ भी प्रोग्राम रन नहीं हो सकता। सो दैट्स व्हाई बूटस्ट्रैप प्रोग्राम का सबसे पहला काम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करना सो दैट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करना स्टार्ट कर दे जैसे ही हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं। Now, general purpose computers run most of their programs from the read-writable memory, which is known as the main memory. So, main memory is fast as compared to secondary memory. So, जो हमारा overall concept है पूरे semester में जो रहेगा, हमें कोई भी process को एग्जीक्यूट करना है, हमें कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, सबसे पहले वो मेन मेमोरी में जाएगी। देन सीपीयू विल बी एबल टू execute that specific program. So main memory is also known as random access memory. आप सब लोगों को पता होगा। Issues क्या है random access memory के साथ? Random access memory is volatile. जैसे ही मेरा सिस्टम ऑफ होगा, जितना भी डेटा है रैम में वो सब डिलीट हो जाएगा। एंड second major problem is RAM is too small to store all the needed data and programs permanently. So मैंने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, अगर हम कोई नया मोबाइल फोन भी खरीदते हैं तो हमें रैम मिलती है 4 GB, 6 GB, 10 GB, लेकिन हमें रोम मिलती है 128 GB, 256 GB. सो दैट इज द डिफरेंस। कॉस्ट का डिफरेंस है, प्राइस का डिफरेंस है, फास्ट स्पीड का डिफरेंस है। सो इट डिपेंड्स अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। तो भाई जनरल स्ट्रक्चर क्या रहता है? वी ऑलवेज यूज सेकेंडरी मेमोरी। हम हार्ड डिस्क का कंसेप्ट यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, रीजन बीइंग द परमानेंट स्टोरेज। Secondary storage is non-volatile. It is an extension of main memory that provides the large non-volatile storage capacity. बहुत सारा डेटा हम इस पर रख सकते हैं, रख भी सकते हैं, सिस्टम ऑफ भी हो जाए तो हमारा डेटा डिलीट नहीं होता। सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज यूज हार्ड डिस्क। इवन सम ऑफ यू मस्ट बी यूजिंग एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जिनके पास बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी गेम्स, वीडियो स्टोर करके रखनी है। सो ओवरऑल पर्पज क्या है? जितना डेटा है वो हम सेकेंडरी स्टोरेज में रखेंगे, सेकेंडरी मेमोरी में रखेंगे, हार्ड डिस्क में रखेंगे, लेकिन उनमें से किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, देन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस मस्ट फर्स्ट बी ब्रिंग इनटू द रैम एंड सीपीयू विल देन एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर प्रोसेस और टास्क. And if I talk about the secondary storage, the most commonly used secondary storage device is the hard disk, which is made up of magnetic disk, and some other memory devices or the types of memory includes the cache memory, the magnetic tapes, etc. So I hope in your first year you must have studied about the basics of computer programming. Now this is very important. Now we have different options of storage systems, but
We can organize those storage systems according to these three important parameters, which is speed, cost, and volatility. So speed के basis पे कौन सी memory ज़्यादा fast है, कौन सी memory ज़्यादा महंगी है, volatile. रैम के अंदर जितना भी डेटा है हमारा सिस्टम ऑफ होते ही उड़ जाएगा, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हमारा डेटा स्टोर रहता है. सो डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट we have a hierarchy. Caching के बाद I will just do it later on. So you can see this particular picture. This is the hierarchy of the various kind of storage devices. The topmost is the registers. Then we have cache memory. Then we have main memory. Main memory is also known as the random access memory. Then we have electronic disk, then magnetic disk, then optical disk, and then the magnetic tapes. So these 7 kinds of memories are there. First 3 are basically the main memory, or we can say which are volatile in nature, and last 4 are second examples of secondary memory, which are non-volatile. And you can see the higher levels are more expensive. Registers सबसे महंगे, then cache memory, then main memory. जितने जितने हम नीचे जाते जाएंगे वो उतने ही सस्ते होते जाएंगे, लेकिन जो जितना महंगा है, जो जितना कॉस्टली है, वो उतना ही फास्ट है. सो इफ आई वांट टू हैव द फास्टेस्ट एक्सेस देन वी मस्ट यूज द रजिस्टर्ड. सो हम रजिस्टर में सिर्फ वही चीजें डालेंगे जो हमें बहुत फास्ट कंप्यूट करनी है, बट द प्रॉब्लम इज due to its expensiveness, due to its cost, we are always able to have a limited space. So हमारे पास RAM हमेशा कम होती है. You can see this is the concept of main memory, that is random access memory. तो हमारे पास RAM हमेशा limited होगी, but magnetic disk, अगर मैं hard disk की बात करूँ या ROM की बात करूँ, we have more hard disk space available as compared to main memory. So the overall concept of computer system या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बोलता है, आपको जितना डेटा स्टोर करना है आप सेकेंडरी मेमोरी में करो, बिकॉज ये चीप है एज कंपेयर टू मेन मेमोरी और कैश मेमोरी. और मेन मेमोरी आप किसके लिए यूज करोगे, जहां आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराने हैं. सो मेन मेमोरी में ऑलवेज वी यूज टू हैव लिमिटेड स्पेस. सो द ओवरऑल कंसेप्ट इज whatever we want to execute in our computer system using operating system, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा डेटा है वो हार्ड डिस्क से कहा जाता है रैम के अंदर, एंड देन सीपीयू विल बी एबल टू एग्जीक्यूट दोज प्रोसेसेस. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू दीज थिंग्स. तो इन चीज़ों का हम बहुत बार यूज करेंगे. पूरा प्रोसेस मैनेजमेंट ही हमारा जो चैप्टर है, जो मॉड्यूल है, इस पे डिपेंडेंट है. वी विल सी ईच एंड एवरीथिंग कि हम मेन मेमोरी से कैसे सीपीयू पे एग्जीक्यूट कराएंगे प्रोसेस को. अगर एक ही टाइम पे 20 प्रोसेसेस आ गए हैं तो सीपीयू उन 20 में से सबसे पहले कौन से प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, क्यों करेगा, ये सारी चीजें हम देखेंगे. बट आई होप यू मस्ट बी फेमिलियर विद ऑल दीज टर्म्स. सो द ओवरऑल जो पर्पस है आपको ये इमेज दिखाने का, सो यू मस्ट नो द हायरार्की ऑफ द वेरियस स्टोरेज स्ट्रक्चर विच इज अवेलेबल, एंड मेनली वी विल डील विद दिस random access memory for executing the various processes, and we will also talk about the secondary memory, and in secondary memory we will focus on magnetic disk, which is generally our hard disk. ओके, सो कैशिंग एक वर्ड यहाँ रह गया था. तो कैशिंग क्या कंसेप्ट होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को कॉपी करना, कहाँ पे, किसी भी फास्ट स्टोरेज सिस्टम में, बिकॉज जितना फास्ट होगा उतनी जल्दी वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा. तो अगर हम बात करें मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की, तो मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में से मेन मेमोरी इज फास्टेस्ट. सो मेन मेमोरी कैन बी व्यूड एज अ कैश फॉर द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. तो अगर मेरे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में कोई भी डेटा पड़ा है, उसमें से मुझे कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है, तो उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल फर्स्ट कॉपी दैट पर्टिकुलर थिंग इनटू द faster memory. So we will copy that into RAM and then we will execute it. So this process of copying information into any faster storage system is known as the caching. So you can see here also this very important principle, and it is used at many different levels in a computer system. So information in use is copied from the slower to faster storage temporarily. So हमारे concept में हमें सारी storage devices की बात नहीं करनी. हमारे पास एक मेन मेमोरी है, हमारे पास एक सेकेंडरी मेमोरी है. मेन मेमोरी फास्ट होती है, सेकेंडरी मेमोरी स्लो होती है. तो जब भी हमें प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना है तो हम सेकेंडरी मेमोरी से उसे पहले रैम में लेके जाएंगे, मेन मेमोरी में लेके जाएंगे टेम्परेरीली फॉर एग्जीक्यूशन ओनली. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज द कैशिंग प्रोसेस. सो बाकी जितना है वो हम डिटेल में वी विल स्टडी लेटर ऑन. ओके, so moving on to the last topic for today, this is the architecture of computer systems. So most systems uses
a single general purpose processor, and most systems have special purpose processors as well. So भाई इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना, what is a single processor system and what is a multi processor system. So अभी तक 90s की बात करें, इवन 2000 की बात करें, हमारे पास सारे ही मशीन्स सिंगल प्रोसेसर होती थी. सिंगल प्रोसेसर मींस एक मशीन के अंदर एक ही सीपीयू. Fine. Single processor means single CPU in a single machine. But from past few years, we have multi-processors. Multi means many, processor means CPU. So अब ऐसी machines आने लगी हैं जिसमें हमारे पास एक ही machine के अंदर एक से ज़्यादा CPU या processor होते हैं, जिसको हम parallel system भी बोलते हैं, tightly coupled system भी बोलते हैं. Okay. So how many of you have heard about the word dual core? If you can let me know in the chat box. डुअल कोर किस किसने सुना है वर्ड? Okay, Salil has heard, Khushi has heard, Ayush. Okay, so many of you must have heard the word dual core, quad core, octa core. So ये सारे वर्ड आ गए. तो इसका क्या मीनिंग है भाई इन सबका? If anybody can tell, what is the meaning of dual core? Or what is the advantage of dual core as compared to the traditional systems? We can run more than one OS. Okay. Any other answer? Dual core means two processor. Yes, very good, Salil. They will have more threads. Very nice, Devesh. Quad means 4. Okay. Okay, so it was a dual core. Okay, then no, it was dual core. You must have heard dual core. Handles more operations easily. Yes, yes, yes. Okay, task fast हो जाता है, Ayush has said. Okay, so can anybody let me know why task fast हो जाता है? You can unmute yourself also if you want to answer, or you can. हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसर ज्यादा होंगे तो सर नंबर ऑफ थ्रेड्स हम ज्यादा हैंडल कर पाएंगे. Okay, very good. Any other answer? They work simultaneously. Very good, because processes are divided. Okay, that's very good. I think the concept is very much clear to most of you people. So I'm just going to elaborate it for you in the next 5 minutes. We will just finish the today's lecture. So what I was just telling, before 2000, in 1990s, we used to have only single processor system. Single means one processor means CPU here. हमारे पास एक मशीन के अंदर एक ही CPU होता था. बट आफ्टर 2000 और इन 1995 और 6 हमारे पास मल्टी प्रोसेसर सिस्टम आने स्टार्ट हो गए. मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स ग्रोइंग इन यूज एंड इम्पोर्टेंस. एडवांटेजेस इंक्रीज्ड थ्रूपुट, इकोनॉमी ऑफ स्केल, इंक्रीज रिलायबिलिटी. मैं अब इसकी बात करूंगा. पहले मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ. तो मैंने बात की डुअल कोर होता है, हमारे मोबाइल में भी आने लग गया है, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर. Some of you have answered that dual core means 2 processor, dual means 2, quad means 4, octa means 8. That is clear. Dual core hai, that means we have a multi-processor. Instead of one CPU, one processor in my machine, now I have 2 CPU. Similarly, quad core means instead of only one CPU, we have now 4 processors or 4 CPU in my machine. So yes, so one of the most important thing आप लोगों को क्या याद रखनी है, एक CPU एक टाइम पर एक ही टास्क या एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है. ठीक है. सो दैट्स व्हाई ट्रेडिशनली वी यूज्ड टू हैव द स्लोवर एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क. तो हम जनरली क्या बोलते हैं, आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने लिखा कि टास्क फास्ट हो जाता है. सो जनरल डिफरेंस अगर हम बोलें पुराने ट्रेडिशनल सिस्टम में या सिंगल प्रोसेसर और मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स आर फास्टर एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल और सिंगल प्रोसेसर सिस्टम. रीजन बीइंग, नाउ इस बात को, इस लाइन को हमेशा याद रखना, एक सीपीयू एक टाइम पे एक ही प्रोसेस या एक ही टास्क को एग्जीक्यूट कर सकता है. फाइन. सो नाउ इफ आई एम हैविंग ओनली सिंगल सीपीयू, देन ओनली वन प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड एट अ टाइम. But if I am having a dual core, then simultaneously 2 processes can be executed at a time. So some of you have answered very nicely, and many of you knowing the concept quite
correctly. So that's very good to know that you know these things. So if I am having a quad core system, I have 4 different CPUs. So just imagine in my RAM, if I'm having 20 processes which are ready to execute. So अगर मेरे पास सिंगल प्रोसेसर सिस्टम होगा तो क्या होगा, एक बार में एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो पाएगा, देन फर्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, देन सेकंड का टर्न आएगा, देन थर्ड का, देन फोर्थ का, देन अप टू 20. बट इफ आई एम हैविंग अ डुअल कोर सिस्टम, देन एक टाइम पे मेरे पास 2 प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो पाएंगे. इफ आई एम हैविंग अ क्वाड कोर सिस्टम, देयर आर 4 CPUs, so 4 CPUs simultaneously can execute 4 processes concurrently. So easiest example to understand the concept of multiprocessor is our रेलवे स्टेशन पे क्या है, एक टिकट विंडो होती है. सो जस्ट एज्यूम 20 people are waiting to have a ticket, and if there is only one window is there, that is the CPU. तो 20 लोगों की लाइन लगेगी, पहले फर्स्ट पर्सन टिकट लेगा, देन सेकेंड 20 का नंबर कब आएगा, गॉड नोज. बट if we have 2 windows active or 4 windows active, the ticket window, then you can see that 20 people will be divided simultaneously. They will be able to get the execution more fastly. So that's why these multiprocessors are fast. So here we have advantages: increased throughput. Throughput means number of processes executed per unit time. फाइन क्लियर, अगर एक सीपीयू है तो वो एक ही कर पा रहा है, अगर मेरे पास 4 सीपीयू हैं तो वो 20 प्रोसेसेस को बहुत कम टाइम में एग्जीक्यूट करेंगे, तो एग्जीक्यूशन अपने आप फास्ट हो जाएगी. इकोनॉमी ऑफ स्केल, एक ही मशीन के अंदर मैंने 4 सीपीयू लगा दिए, इंस्टेड ऑफ मैं 4 अलग अलग मशीन्स खरीद रहा हूँ, यानी कि मेरे हार्डवेयर की कॉस्ट बच जाएगी. एक ही सिंगल सीपीयू के अंदर 4 अलग अलग सीपीयू लगे हुए हैं, दैट विल अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ द overall system. Last is increased reliability. So what is the meaning of reliability? How much we can trust our system. एक ही CPU है मेरे मशीन में, वो CPU में कुछ खराबी आ गई, मेरा सिस्टम बंद हो जाएगा. एक ही विंडो है रेलवे प्लेटफॉर्म पे, तो अगर उसका पर्सन को कहीं जाना पड़ गया, इमरजेंसी आ गई, वो विंडो बंद हो गई, तो किसी को टिकट नहीं मिलेगी. But if there are 2 windows or if there are 4 windows, the reliability of the system will increase. If one of the CPU failed due to any reason, then the rest of the 3 CPUs will divide the processes according to their availability. So अगर 20 processes हैं तो वो 6 को divide कर लेंगे. First 6 I will handle, next 6 I will handle, and the last 6 the third CPU will handle. But if we have a single processor system and the CPU fails, then the entire system will fail. So मैं जब तक वो CPU ठीक नहीं होगा, the work will stop. But if we have a multi-processor system, fast execution होगी, because simultaneously more processes, more tasks will be executed. Economy of scale, एक ही मशीन के अंदर 4 CPU लग जाएंगे, तो मुझे 3 हार्डवेयर मेरे बच जाएंगे, अलग से मुझे CPU या अपना मॉनिटर और कीबोर्ड माउस नहीं लेना पड़ेगा. रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, हम डिपेंडेंट हो जाएंगे. हमें पता है कि अगर एक भी CPU फेल हो जाता है तो मेरे सिस्टम पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जरा सा स्लो जरूर हो जाएगा एज कंपेयर टू 4 CPUs, बट ओवरऑल सिस्टम हॉल्ट नहीं होगा, सिस्टम फेल नहीं होगा. सो आई होप these concepts are clear to you. So I will just discuss rest of the things in the next class. That is the types of multiprocessor system, asymmetric and symmetric, and we have some more interesting concepts of the multi-programming and multitasking in the next lecture. So I hope I am clear to all of you. So if anybody is having any doubt regarding whatever we have discussed, you can just simply ask me.